Hello students, good morning to all. Today we will discuss the question answer of the poem Father to Son. That was a very important poem. Okay, there are mainly four questions in this poem and we will attempt all the questions. Then you will write down them in your fair notebook and send it to me on my personal WhatsApp number. There are four questions and the first question: does the poem talk of an exclusively personal experience, or is it a fairly universal? What is the writer asking कि क्या ये जो पोइम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही है, क्या वो केवल एक पर्सन का पर्सनल एक्सपीरियंस है या ये एक यूनिवर्सल पोइम, यूनिवर्सल प्रॉब्लम यू कैन से, कि क्या ये एक यूनिवर्सल ग्रोइंग टेंडेंसी है? तो व्हाट इज द आंसर? यस, द पोएम इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द यूनिवर्सल प्रॉब्लम जनरेशन गैप और अंडरस्टैंडिंग गैप. इट इज नॉट रिलेटेड टू ए पर्सनल एक्सपीरियंस of a particular person. It is related to everyone. It is related to every generation. In at present, a gap has come between the parents and the children. Both of them are not able to understand each other. Both of them always try to hide things with each other or one another, you can say, and they cannot understand properly one another. Okay, this is the answer number one. Now we are moving to the second question. How is the father's helplessness brought out in the poem? इस पोइम में एक फादर का जो हेल्पलेसनेस का नेचर है, उसका जो असहायपन है, उसको एक्सप्लेन किया है. तो कैसे एक्सप्लेन किया है वो आपको बताना है. यस, द पोएम completely brings out the helplessness of a father before his son. The father claims that his son does not understand him. His son does not secrete his things with him, and the father is not able to understand the son completely. Although they are living in the same room, yet they are living like a stranger. They speak to each other just like a stranger. It means they are living in the house, not in home. Okay? Yes, beta. Now we are moving to the third question. Identify the phrases and lines that indicate distance between father and son. इस पॉइंट में एक फादर और सन के बीच के जो डिफरेंस को इंडिकेट करने वाली, पॉइंट करने वाली जो लाइंस है, ठीक है, उनको आपको लिखना है. एंड व्हाट इज द आंसर? द फॉलोइंग लाइंस इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन ए फादर एंड ए सन. There are mainly 5 lines. First line, I do not understand this child. Second line, you can say, we speak like strangers. Third line, silence surrounds us. Fourth line, you can say, या वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, ये भी उसका लाइन हो सकता है. और वी टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स, ये भी एक लाइन है जो एक्सप्लेन करती है एक फादर और सन के बीच के डिफरेंस को. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द पोएटिक डिवाइस. डज द पोएम हैव ए कंसिस्टेंट राइम स्कीम? क्या इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो परफेक्ट है, कंसिस्टेंट है? यस. The poem has been divided into 4 stanzas, and all the stanzas have, you can say, perfect or consistent rhyme scheme. And what is the rhyme scheme of the poem? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा राइम स्कीम के बारे में. तो जो लास्ट वर्ड है चाइल्ड, तो A B B A
B, A. This is the rhyme scheme of the poem. I again repeat, first of all A, then B, B, then A, then B, then A. A, B, B, A, B, A. This is the rhyme scheme of the stanzas. That's all for today. Have a nice day.